वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन मॉर्निंग जय दिल से मैं आप सबके साथ आरजे नीतू राइट हियर ऑन द योर वेव्स ऑफ रेडियो हॉट पेपर 12:20 AM. It is exactly 10 o'clock in the studio and we have our guest of the month, Sonal Kulshrestha. Good morning, Sonal. How are you doing this morning? Good morning, Neetu. Doing very well. Thank you. A very good morning to all your listeners too. And to the readers of Desi Tewar who religiously join us for this segment. एंड डेफिनेटली सोनल आपका बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई ड्यू टू विच हमारा शो मंडे जो नॉर्मल फर्स्ट मंडे हम हमेशा रखते हैं उस दिन ना हो सका. बट आई एम सो ग्लैड you were so kind enough to change the date and I'm so happy to have you in my studio today. Sure, thank you. The pleasure is entirely mine, like I always say. Yes. So आज का हमारा टॉपिक, आई एम सो एक्साइटेड सोनल. Coming to America. Yippee! I get to share so many stories, you know. I have so many stories. मैं अभी शेयर थोड़ी देर पहले कर रही थी अपने लिसनर्स के साथ कि मतलब बाथरूम क्लीन करने से लेके okay, डिशवॉशर साफ, बर्तन साफ करने तक. बिल्कुल, बर्तन साफ करने तक, मतलब सारे काम सीखने पड़ते हैं. करने तक सब कुछ सीखना पड़ता है. मतलब मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया था जिसे कहते हैं, लेकिन सोचा नहीं था जिंदगी में इतना काम आएगा. काम भी आएगा स्किल सेट. बिल्कुल, स्पेशली इंडियन मैन, राइट. सीधा माँ की शरण से आ जाते हैं यहाँ. अरे बहुत सारी स्टोरीज हैं. वी हैव टू शेयर ऑल ऑफ दैट सोनल राइट हियर ऑन द एयरवेव्स. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी दैट सोनल कुलश्रेष्ठा फ्रॉम देसी दीवार, शी इज अ ब्लॉगर, शी इज अ कंपोजर, शी इज द लेडी बिहाइंड देसी दीवार. जो आप वेबसाइट है उसको ऑन करें, उनको लाइक करना ना भूलें, बिकॉज देसी दीवार इज प्राउड मीडिया पार्टनर्स विद रेडियो हॉट पेपर. एंड ऑफ कोर्स सोनल हैज बीन राइटिंग इन आवर रेडियो हॉट पेपर मैगजीन एज वेल. तो जो जल्द ही निकलेगी आप लोगों को उसके बारे में भी जल्द ही बताऊंगी मैं. Lekin Sonal, let's continue with our discussion. So today we are talking about coming to America. So if you guys have any stories that you want to share with us, coming to America, challenges you faced in life, or what all you did when you first came to America, all those stories, do share it with us. Studio numbers 817-468-1220. तो सोनल, जैसे आप आई हैं, of course, most of us, I think we all came with getting married to our husbands, and then we all came over here, try to look for a job or work or study, something like that. So that we can acquire some degree from here. And फिर उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया. What was your story? What was it like with you? Okay, so I came here, to join my husband after I got married. And my coming to America stories, okay, I can't share and we can't laugh at other people if we don't laugh at our own stories. So let me tell you mine. The very next day, my husband was taking me to introduce his friends. And on the way, there was a big traffic backup on the highway. And he said, बहुत traffic jam है यहाँ. And I looked around and I was so surprised that he is calling this traffic jam. And I was like, इतनी जगह है चारों तरफ. And he can easily wiggle his way through it. Because India में traffic jam means door to door, bumper to bumper. Bumper to bumper. Right? बिल्कुल. And I was like, you can easily wiggle your way. And I asked him, ये traffic jam है? ये traffic jam है? अच्छा, फिर आप ये भी हैरान हो रहे होंगे, आपका हस्बैंड हॉर्न पे हॉर्न क्यों नहीं बजा रहा? I know, exactly. And they were patiently waiting for the traffic to clear. And then when we reached his friend's house, he was pointing out, see that, that's highway 360. And then, that merges with highway 183. And I was like surprised कि highways are right here. Because India में तो हम road ही बोलते हैं, right? बिल्कुल. And highways to us means like state highways. जब हम दिल्ली से मथुरा जा रहे हैं तो वो highway लो, right? So I was surprised कि चारों तरफ highway है क्या यहाँ? और ये ऐसे गली से निकलो highway आ गया. I know. So that was funny, and my husband was like, no, I don't think I haven't introduced all that concept to her yet. That non-stop when you get to go with no traffic signals, right? अब तो of course India में भी ऐसे हो गया. Excuse me. I mean, especially in big cities, right? Sure.
So, and then another thing that I remember, I love the greasy pan crust pizza of Pizza Hut. वो मुझे इतना पसंद था. My husband would order medium and I would eat 5 of the 8 slices. Oh my God. So he started ordering large and I would still eat 5 of the 8 slices. So, and then, you know, every time he would ask, आज dinner में क्या करना है? And I would go pizza. So he started making pizzas at home. Oh, and okay. then I realized he was using the frozen rogni naan as a Right, base for right, the right, pizza. right, And I right. still loved it. Right. So those were my stories. And of course, the dishwasher story. I have the That is dishwasher story. I'm telling you. everyone. Okay, yeah, let's hear your story. You know, Meet. very interesting because seriously, मैंने पहले भी ये बात शेयर की कि जैसे मैं इस कंट्री में आई, मतलब 20 तरह के तो शीशा साफ करने के ही क्लीनर होते थे, 20 तरह के टॉयलेट साफ करने के क्लीनर, 20 तरह के we had for cleaning the kitchen and all. हर चीज के लिए there's a specific gear यहाँ पे. Exactly, टमाटर की मतलब 20 तरह की वैरायटीज होती थी. Right. I'm like कौन सा टमाटर लूं यार, टमाटर को सब्जी बनानी है, मैंने मटर पनीर बनाना है, सिंपल बनाना है. And सब वेजिटेबल्स कितने बड़े बड़े लगते थे, हमें याद है. गोभी इतनी बड़ी, बनाना इतने बड़े, बहुत बड़े. प्याज एक इंडिया में छोटा सा लाइक प्याज होता है, यहाँ पे इतना बड़ा प्याज होता है विच यू कैन यूज इजिली विद 2-3 सर्विंग्स. लेकिन सो व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल दोस थिंग्स इट टुक अ टाइम. अच्छा फिर शुरू में सीरियसली एक डील भी होती थी. आई रिमेम्बर यहाँ पे भी सुनते हैं, अब तो खैर इतना कॉमन होगी ये चीज, वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट. बाय वन गेट वन फ्री. सीरियसली लिटरली सोनल मैं बता रही हूँ आपको, मैं ये सोचती थी मैं बाय वन गेट वन फ्री तो मैं एक लूं, पर मैं 2 लोग हैं घर में तो 2 केचप मतलब साल भर नहीं खत्म होएगी मेरी, तो मतलब मैं क्या करूंगी 2 लेके. अच्छा फिर मैं एक ही ले लूं तो मेरे को फिर भी एक के पैसे देने पड़ेंगे या हाफ प्राइस हो जाएगी उसकी. मतलब दोज वर little bitty things which you came across when you came first to America, and you had all those questions and you did not know how to work with all those things. Right. I know that was such interesting times, right? Definitely. So these were our stories. I understand, of course, बहुत सारी you have more stories of women, I guess, that you came up with, especially when they got married and they came to America. So let's take on their stories. Yeah, sure. A lot of the women shared their stories on Desi Tewar actually. So I have one story from Geeta Sule from Texas. She says, when I first came to America in mid-1990s, threading services were not available and waxing and other salon services were very expensive. So I frantically called my mom and asked her to send the hot wax from India that I was used to using there. Yes. And I asked her to send it with my husband's cousin. He was going to be visiting us soon. So the hot wax arrived safely here in America, but all over his belongings in his suitcase. So it was so embarrassing. We helped him clean every single business suit of his. That's a disaster. Oh my gosh, Geeta, yeah, that is funny. Oh my God. Then I have a couple of anonymous stories actually, and when you hear the story, you will know why the reader wanted to keep it anonymous. So this one goes, my sister came to visit me during the first week of landing here. She already lived here. Okay. She said, you can get away with wearing anything in America. Yes. Nobody stares and nobody cares. Exactly. That's so true. Now I hadn't bought my swimwear yet and she hadn't packed hers either. So I said, in that case, let's go for a swim. And the two of us enjoyed a good 2 hours in the pool wearing black panties and black bras, hoping that people will assume these are bikinis. And you're right, nobody stared and nobody cared. Seriously? Oh my God. So thinking back, she goes on to say, thinking back, I can't believe we did that. And our husbands to date pull our legs about it. Oh my God. I don't blame them. I Poor know. husbands. तभी कहते हैं शादी के बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है. I know. And then there's a third story that is anonymous also. She says, my parents were very conservative in India. When I came here, I loved shopping for clothes here. Right. I got a lot of strapless tops and halter dresses and tiny shorts
from anywhere, like Target, there was Venture, there was Macy's. Yeah. And I was surprised at how good I looked in them. And even my husband found me very sexy in them. That's true. Those are the changes, you get to feel once you step out of your home and you come across so many challenges. Actually, you know what? Isi baat mein I have a song request from Shweta Verma in Ohio. She says when my husband was a little kid, maybe around 8 to 10 years old, or I'm not sure, but he used to sing this song from Des Pardes movie, Jaisa Des Vaisa Bhes. And so this song, if you could kindly play for Sure, definitely. तो किसने request किया इस गाने की आपके This पास? is Shweta Verma from Ohio, and she says people used to find it very cute because he didn't even know the meaning of this song. Aww. So they used to make him sing again and again. So Shweta Verma ji from Ohio, thank you so much for requesting this wonderful song. We will play it right here on the airwaves of Radio Hot Pepper 12:20 AM. And of course, if you have any stories to share with us, just like Sonal and me right here, we are enjoying ourselves in the studio. Definitely you can be part of this discussion as well. Studio numbers 817 Hot 1220. That's 817 468 1220. Shweta ji, here's your song. जैसा देश वैसा भेष फिर क्या डरना अरे जैसा देश वैसा भेष फिर क्या डरना अरे छोड़ो रानी छोड़ो यूं ही आहें भरना अरे काहे की शर्म है कुड़िए जल्दी करना मन को ढक ले गोरी तन का ढकना है बेकार ढकना है बेकार फूल न महके जब तक उसका खिलना है बेकार अरे अक्सर ऐसा होता है पहली पहली बार आ मुझसे तू ले ले हिम्मत थोड़ी सी उधार झूठ बोलू न बोलू न बोलू बोलू रे अरे हाथों में मेरे तू अपना हाथ धरना
जैसा देश वैसा भेस विल कुड़िए हुण आपा की लेट करना। ये तो होगी कुड़ियों की बातें कि जब लड़कियां देश में आती हैं, डिफरेंट देश में आती हैं, तो उनकी कैसे जज्बात होते हैं, उनके अंदर कैसी फीलिंग्स होती हैं, ये तो बातें होगी उसकी। सोनल, कमिंग बैक टू आवर शो, यूर ट्यून इन टू मॉर्निंग चाय दिल से आरजे नीतू के साथ राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ रेडियो हॉट पेपर 12:20 AM। एंड ऑफ कोर्स सोनल, अब हम बातें करेंगे अपने जेंटलमैन की। क्या बात है, मैंने कितना बड़ा वर्ड यूज किया ना। नहीं, एक्चुअली विल टॉक अबाउट अ मेन, बिकॉज men when they come over here, their sole purpose is of course better bread and butter, right? Yeah, better life. Exactly, For the family, for the right. family, they are thinking about, chahe even if they are in the bachelor age, their thinking is to make money and send that back home. या अगर वो शादीशुदा है तो of course taking care of the family, all that stuff. So what do you guys think? लेकिन उससे पहले हमारे साथ कोई हैं जो कुछ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। Sure. Good morning. Good morning, is Radioshow. Hi RJ Shan, how are you doing? I'm good. How about you? I'm doing fabulous. Thank you so much. What do you have to share? That. Wait, what was your question? So my question actually is more from those point of view, those people who come from, South Asian countries like India, Pakistan se aate hain, and they are coming for the first time and, to America, what kind of stories they have. So I don't think you belong into that category, right? Yeah. Yeah. So that's fine. Go ahead and tell me what you want to share. Maybe he can share his experience, what he experience thinks with- about stories that he has heard. Have you heard of any story, Ishan? About those people? I हमें haven't. Only my mom tells me about them sometimes. What? Like some of her stories. What is her story? Go ahead and share it. Some of her stories. I don't remember any of them, but I know they're really funny. Okay. that's so sweet, Ishan. That's wonderful. Wonderful. All right, Ishan, what do you want to listen to right now? Can I listen to Malang? Malang song? All right. I'll try to play it because today Sonal Auntie is in the studio with me. So we'll try to see if we get time to play your song. Okay? Okay. All right. Thank you. Thank you so Thank much, you for buddy. calling. Thank you so much. Bye. Bye. 817-468. We have another caller. Good morning. Good morning, Vidya. Hi. Good morning, Mona darling. How are you doing? Doing as good as it can get. That is wonderful. Wonderful to hear back from you. Yeah, back from Houston. Results were not very good. क्यों? क्या हुआ? Actually, sister ने fruit juices पे बहुत तवज्जो दी थी ना. जी. तो एक तो ये है कि हमारी फैमिली में शुगर है. Oh, And okay. cancer survive on sugar thing. तो ब्लड उसमें कैंसर सेल का थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, उसको डिक्रीज कर देंगे. जैसे हीट अप करते हैं, हीट डाउन करते हैं. नॉट अ बिग प्रॉब्लम. देयर इज अ प्लान वर्किंग ऑन इट. अच्छा, चलो शुक्र है परमात्मा जिंदगी का. प्रैक्टिकल है. एक है हम ड्रामा करते हैं, लो क्या होगा, जरा सा कुछ होता है. एक होता है ओके व्हाट इज अ प्लान, दिस इज थिंग. सो शी इज ऑन स्पेशल डाइट एंड I'm proud of her. She is very strong, and I am also. We are on totally different diet. चलो, that's very good. I'm so happy to hear that कि you guys are working on it. सुबह ऑफिस जाने के लिए हमने बनाए थे. मैंने कहा तुम्हें भी शेयर कर दूं तुम्हारे साथ. जी, ब्रोकली, केल, पार्सली को पीस ले, वो उसमें प्रोसेसर में नहीं होता, कोर्स किस्म का कर लिया. जी. फिर पिसी हुई मूंग की दाल थी भिगोई हुई, वो थोड़ी मिला दी, थोड़े ओट्स मिला दिए. और अगर आपको उसको ग्लू टुगेदर करना है तो थोड़े से चिया सीड भिगो के डाल दो. और उसके छोटे छोटे पेटी बना लिए. जी. बट शी इज हेवीली ऑन बीटरूट. बीटरूट इज वेरी वेरी गुड. केल इज वेरी. जितनी सब्जियां हैं सारा ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं सारा. तो विद इन 6 weeks she'll be back in the normal range. होता है कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल हैं, लेकिन वो इंक्रीज होते हैं अगर स्ट्रेस बढ़ जाए या तो बस वो उसको फूड सही कर लो, ब्लड क्लिंस कर लो, वो नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं. जैसे शुगर हाई होती है ना, कैंसर को भी मेंटेन करना पड़ता है जैसे शुगर को. इट्स नॉट समथिंग विच किल्स यू. बिल्कुल बिल्कुल. इफ यू डोंट, अगर शुगर को मेंटेन नहीं करेंगे ना
तब भी वो तंग करती है, राइट? नहीं, डेफिनेटली वी विश हर ऑल द वेरी बेस्ट कि जल्दी मतलब से ये है कि जीने की उमंग होनी चाहिए. शी वांट्स टू लिव एंड उसकी पूरी शी इज फुल ऑफ लाइफ. तो मैंने कहा चलो बिटिया को सलाम करें. एवरीथिंग इज वेरी गुड, ब्यूटीफुल. मतलब हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर रिसोर्सेज का, वहाँ इतनी आसानी से हर चीज हो जाती है ना. नथिंग इज ट्रबल. हर चीज लोग फंस जाते हैं. हाय अल्लाह, ये क्यों हुआ, ये नथिंग. क्योंकि हम आए हैं टेम्पररी यहाँ. वो जो भी समझते हैं यहाँ परमानेंट है ना, वो मुश्किल में पड़ जाता है. नहीं, तो ये बताइए, जब आप शुरू में आई थी तब भी आपको लगता है रिसोर्सेज वर दैट इजी टू फाइंड? हमेशा इत्तेफाक से व्हेन आई केम मेरी पड़ोसन बहुत अच्छी थी. उसने मुझे कहा देखो तुम बिफोर यू माय हस्बैंड वांटेड मी टू वर्क एंड कंट्रीब्यूट. तो मैंने अप्लाई तो किया, लेकिन आप जब वहां से आते हैं तो कंफ्यूज होते हैं. यू टेक सम कोर्सेज आल्सो. आई वाज एडमिटेड, राइट, यू नो, आई गॉट रजिस्टर्ड फॉर दैट. लेकिन मेरी एक नेबर बहुत अच्छी थी. उसने कहा देखो तुम यूनाइटेड वे में ज्वाइन करो और काउंसलिंग करो वहाँ. यूनाइटेड वे में? ओके, यूनाइटेड वे में मैंने ज्वाइन किया था. और उसकी जो तो फिर वहाँ पर पता चला कि वहाँ एक रिसोर्स बुक थी. अच्छा. रोता उस वक्त आदमी है जब उसके पास चॉइसेस और उसको लगता है या अल्लाह क्या होगा. अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो एक नहीं तो दो रिसोर्सेज हैं. इतनी एमडी एंडरसन जाते हैं ना हम ह्यूस्टन, तो वहाँ असल में हुआ ये कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी को हेल्प मिले. और ये नहीं कि आई एम सुपीरियर या पिटी पार्टी नहीं है. तो हम जब इसको कीमो दे रहे थे ना, एक्चुअली डायग्नोज लास्ट मार्च सडनली, और फिर जुलाई तक वो हील हो गई. अच्छा. उसके कैंसर सेल नीचे आना शुरू हुए. 300 प्लस 75 थे. अच्छा. वो ब्लड काउंट में करते हैं. 300 इतने सारे थे, 400. फिर डाउन होते होते 100 तक आ गए. फिर उसका कीमोथेरेपी वो कंटिन्यू कर नहीं सकी, क्योंकि वो कीमो मॉलिक्यूल उसके लिए डैमेजिंग था, उसके हार्ट के लिए. अच्छा. तो डॉक्टर ने कहा चलो तुम इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करिए, उसको छोड़ दो, तुम 2 टैबलेट्स ले लो. फिर उसने वो 2 टैबलेट्स में भी थोड़ा ढीलापन किया. अब ये जो नया इसी हफ्ते एक नया मॉलिक्यूल, उसको बायो मॉलिक्यूल कहते हैं, कीमो की तरह है लेकिन उसे बाल नहीं झड़, तो बायो मॉलिक्यूल पे चली गई. ये तो इतना हाश है कि 4 हफ्ते में दोबारा सारे कैंसर सेल साफ कर देगा. इसके अलावा बीटरूट जूस, केल जूस, ये सब कैंसर को साफ करते हैं बॉडी से. अपना ब्लड साफ रखें, क्योंकि एक गंदा फूड आपकी बॉडी को फिर से डिटॉक्सिफाई. आप ये देखें कि बॉडी को साफ सुथरा दरिया की तरह रखना है. बिल्कुल बिल्कुल. कचरा नहीं फेंकना. बिल्कुल. तो इतना हमने टॉक्सिक खाया वहाँ. बिल्कुल 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 सही बात है. ह्यूस्टन में टॉक्सिक फूड खाया, एक दिन के बाद हमने कहा दैट्स इट. टॉक्सिक फूड भी कभी कभी खा लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमने वीट ग्रास जूस सुबह लेना. बिल्कुल. तो अगर आदमी हेल्थ की, हालांकि क्रेविंग बहुत होती है. जब से हम ह्यूस्टन से आए वी आर ईटिंग हेल्थी फूड, कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं. तो क्रेविंग होती है, क्योंकि हमारे जिस्म में वो शुगर क्रेविंग, वो मजे खाने की क्रेविंग, लेकिन ये एडिक्शन है. तो आहिस्ता 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 बॉडी भी अब डिफरेंट हो रही है. तो वी आर ईटिंग एक्सट्रीमली हीलिंग and cleansing food, both of us. And I'm so happy. तो बहुत खुशी हो रही है कि ये एक again we were not into that extreme good food कि सब toxic food मिटा दिए हैं कम से कम 6 हफ्तों तक. चलो, that is very good. I'm hoping कि everything goes out very smoothly for you guys. और updated news मुझे जरूर दीजिएगा. स्मूथली जा रही है यार, बहुत स्मूथली जा रही है. I'm very happy. That's very good. I'm so happy for you. Thank you, dear. Thank you so much. Best wishes to you, Mona. Thank you. 8174681220 is the studio number. तो चलिए सोनल, अब आप रिज्यूम कीजिए what you have to say. So we were talking of men's experience when they come here to work right away, right? So yeah, their experiences are largely similar to the women's, right? Amazement at the centrally air conditioned apartments here, the wall to wall carpet like we used to call, right? Wall to wall carpet हम बोलते थे. फिर the cars here, Hondas and Toyotas before 2000, and then later BMWs and Lexus. Now people who come here buy directly Lexus, BMWs, right?
And then they are also amazed at the professional environment here, right? How you address the boss. Boss को sir नहीं बोलते, Sir नहीं like बोलते India हैं, में हाँ, sir हाँ, बोलते थे, right? You say Richard, you say Bob, you say Robert, right? So it's all first name basis. बिल्कुल. And they are amazed at everything. And on top of all the amazement, it is this thing of, जैसे हमने पहले बात की, सारा काम यहाँ खुद करना पड़ता है, बर्तन खुद करना पड़ता है, and everything, right? And like Mona just called and shared, you are amazed at how easily things can be done here, right? Yes, You don't have to be street smart like you have to be in India to get things done. Right. You know, there's a process for everything. There's a right? process for everything. There's a process for everything, and things get done. Yes. It's as simple as that, It's as and that simple as really amazes you. Another thing that you're amazed at is that the cleanliness, right? कि मतलब जैसे someone visiting from India commented कि हमने सुना था कि US में सब साफ होता है, बट ये नहीं पता था दूर दूर तक हर जगह साफ होता है. There's not even one dirty spot that you can find. Now we have picked two stories that sort of convey the experience on a more personal level. Right. So this story is from Sumit Mohan of Phoenix. He says that he once went to a restaurant where he was asked for here or to go. He didn't quite catch the accent at first. And when he did understand, he thought he was being discriminated against. So he clearly and firmly said, "You see that seat there? I'm going to sit there, eat my dinner, and then go." So then there's another anonymous story. He says, "I came to work here in America on a project from India in early 2000. You instantly feel the difference in culture. Girls here carry rather revealing outfits even, with low necklines and high hemlines, quite confidently and in a matter-of-fact manner, simply because there aren't men staring, leching or passing comments on the roadside." Yes, that's very true. And he noticed that, and he says, quite frankly, I even visited baby dolls couple of times and was quite fascinated by the skinny white girls. In fact, even dark-skinned girls with toned bodies there. So those are the differences Right, that right. he noticed when he came here on a project, he says. But Neetu, for all the excitement, when we first come here, we do tend to get defensive of India and everything that pertains to India, right? Right. And we see that in our parents too. When they come here, they'll say, हमारा इंडिया ही अच्छा है, right? तो इसी बात में, in fact, I have a song request by my in-laws who are visiting us these days, and they are currently in California. The song is "I Love My India" from the Pardes movie. In 1997 का सॉन्ग है ये. जी बिल्कुल, आई रिमेम्बर दैट सॉन्ग. अमरीश पुरी जी पर फिल्माया गया है ये गाना. बहुत ही खूबसूरत गाना है. एंड महिमा चौधरी ने उसमें शी हैज डन अ फैबुलस जॉब. नदीम श्रवण जी का म्यूजिक. सो इंडीड, डेफिनेटली, विदाउट एनी डिले, वी विल गो अहेड एंड लिसन टू दिस सॉन्ग. Sure, right here. absolutely. Thank All right, you. perfect. So, ladies and gentlemen, one more time, you're tuned into Radio Hot Pepper 1220 AM for all your stories regarding coming to America. You can share it right here on the airwaves. Give us a call. 817-468-1220 is the studio number. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Sim sim pola pola, sim sim pola. Sim sim pola pola, sim sim pola. Fine flat flute, pipe, petola petola. Drum drum duplex, simbola simbola. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Krishna Krishna. We want to go. Are bolo bolo. America, America, America.
पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। और इंडिया के अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, स्पाइसी कुजीन इज ऑफरिंग ईद एक्सट्रावेगेंजा, which is they are inviting you all to this event which is full of extravagant shopping spree while you enjoy their famous Sunday brunch. And of course, you can be a booth sponsor for this event, and if you need more information for booths or sponsorship, give them a call at 214-437-9512. This event is going to take place on September 6th, which is a Sunday, from noon to 10 p.m. at Spicy Banquet Hall, located at 1800 Valley View Lane, Suite 104, Irving, Texas 75061. Spicy Cuisine is proud media sponsors of Radio Hot Pepper 1220 AM. Alright Sonal, we'll resume our segment since ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम गाने को बैकग्राउंड में चलते रहने देते हैं, लेकिन हम साथ में अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. So Sonal, tell me about the student life. We talked about ladies, we talked about men. Now about the student life, what do you think about the South Asian students who are coming over here, especially हमारा UTA that is full of kids. So many kids are over here. In fact, मैं कई बार जाती हूँ वहाँ पे, कईयों के मम्मी पापा होते हैं लिटरली साड़ी वगैरह में, they are walking around, कुर्ता पजामा में they are walking around. It's so much every passing second person or third person is Indian. अपना देसी है, बच्चा. I know, and that is, Neetu, that is precisely why we are having this topic this Right. month, right? We decided to do it because fall is the time as the schools start to reopen, Yes. colleges start to reopen, student influx from India starts, Exactly. right? Yes. So now instead of stories, we'll do some stories too, but I've compiled 5 points that pretty much reflects the coming to America experience of students here, whether a boy or a girl. Right. So if you first came to America as a student, then first you or someone you knew shared a 1-bedroom apartment with half a dozen others here, right? That's right. Americans know about that too, and you will probably get asked that question at some point in your life. Yes. So second, if you are a meat eater, you probably ate a hamburger simply because it was cheaper. And why not? A penny gained, saved is a penny gained, right? Exactly. And in fact, I have a story on this topic. The anonymous reader says, my friends and I used to work in the college cafeteria. Acha. We would be so tight on money that when one of us was behind the counter at the cafeteria, we would ring in hamburger at the checkout, but let him have the chicken or the veggie burger, which was more expensive. And if there was no friend on the shift, then hamburger it was. So, and the third, you or someone you knew probably bought a printer, copier, fax machines Bilkul. during your finding a job days. Right. Simply to return it afterwards. And in fact, in this series, TV series, Parks and Recreation, there's this Indian guy who's portrayed as living a lavish lifestyle beyond his means. And once he gets asked, how can you even afford all this stuff? He says, oh, I'll return it later.
some of these cases probably did get the word out, and that Definitely, is the cause of this Now more bias strictness. portrayal Yes, exactly, in the exactly. TV series of Yes. Indian characters. बिल्कुल, बिल्कुल. Okay, fourth is you or your roommate probably actually learned elaborate Indian cooking simply because you were craving it so much. You're craving your mummy's food. Mummy's food so much, exactly. And Ji. last is you and everyone you knew were dazzled by the beach scene here. Yes. The barely there bikinis and the all accepting attitude. Yes, Right? yes. So those are, of course, students work hard, they do odd jobs to earn the money, to earn their American dream, right? And they are perpetually short on cash all the time, right? So student life is a lot more about missing family and the shielded life that they led in India. Exactly, Right? exactly. So on that note, Lalit Verma from California has a song request for us. Chitti Aayi Hai Watan Se. Aw, He that's- says that is one song that definitely makes everyone nostalgic when they first come to America, especially as a student. Yes, definitely. That is very true. Say the name one more time. चिट्ठी आई है वतन से. I think movie का नाम है नाम. नहीं, किसने रिक्वेस्ट की है Oh, इसे? Lalit Verma from California. Lalit Verma from California. Lalit ji, thank you so much for requesting this wonderful song. Indeed, we all can relate to this song. And let's bring back those sweet memories of you a little bit, making you realize what your life is over here. चिट्ठी आई है 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 वतन से चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है ऊपर मेरा नाम लिखा है अंदर ये पैगाम लिखा है ओ परदेस को जाने वाले लौट के फिर न आने वाले सात समंदर पार गया तू हमको जिंदा मार गया तू खून के रिश्ते तोड़ गया तू आँख में आंसू छोड़ गया तू कम खाते हैं कम सोते हैं बहुत ज्यादा हम रोते हैं चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है सूनी हो गई शहर की गलियां कांटे बन गई बाग की कलियां कहते हैं सावन के झूले भूल गया तू हम नहीं भूले तेरे बिन जब आई दिवाली दीप नहीं दिल जले हैं खाली तेरे बिन जब आई होली पिचकारी से छूटी गोली पीपल सूना पनघट सूना घर शमशान का बना नमूना फसल कटी
चिट्ठी आई है। बिल्कुल सोनल, इस गाने से हमें बिल्कुल यही सीखने को मिलता है कि काफी बार इंसान, जो पेरेंट्स हैं जो बैक होम इन इंडिया, वो लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं कि चिट्ठी आएगी चिट्ठी आएगी। अब तो इंटरनेट से ईमेल आएगी, खैर अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो फेस टाइम है, फेस टाइम है, टेक्सटिंग है, वाइबर है, व्हाट्सएप है, बिल्कुल ये सब चीजें I हैं know. जिसमें फोटो भी देख सकते हैं लोग। बात पर वो टाइम था जब पहले के 10 जमाने दिन में वेट करना पड़ता था बिल्कुल। मेल आने का। 10 दिन से ज्यादा 10 दिन राखी, आई से। रिमेम्बर, महीने पहले भेजने पड़ती थी ताकि भाइयों को राखी मिल जाए, लेकिन फिर भी टाइम पे नहीं मिल पाती थी कई बार। सो दोज वर द डेज, आई मीन आई एम श्योर मेनी पीपल्स आईज वर आर गोइंग टू गो वेट राइट नाउ थिंकिंग अबाउट दोज टाइम्स कि यार अब तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, 2 दिन में राखी मिल जाएगी। सीरियसली, राइट? Right, exactly, इट्स इंटरेस्टिंग, पीपल मस्ट हैव गॉन थ्रू सो मच इन दोज टाइम्स, दे मिस देयर फैमिलीज। कई बार साल 2 साल 3 साल जाते नहीं थे अपनी कंट्री में, बिकॉज वीक में एक बार बात करते एक बार बात family करते थे। से, एग्जैक्टली, ऑल दोज थिंग्स, राइट? अब दैट कैन बी अनदर फ्री टॉपिक। फैसिलिटीज है, फेस टाइम कर लो, डेली कर लो, डेली कर लो, डेली कर लो, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है ये I चीज। know. तो ये बताइए सोनल, डू यू हैव एनी टिप्स फॉर स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु come to America for the very first time in their lives over here now? अब आजकल के जमाने में, हम फास्ट पेस जमाने में अब तो हम भी जी रहे हैं। So I know you have written an article on this on Desi Diwar, so tell me something about that. Right, absolutely, Neetu. We have 10 tips for the fresh off the boats, FOBs. We were ourselves Yes, fresh off the yes. boat once, Yes. right? So a lot of these tips, in hindsight, would have been definitely helpful to Helpful us. for So our us. hope is that some of these, or maybe even all, might be helpful to someone out there. So the first step is physical space is very important, right? Coming from India, we are used to having a crowd around us, and we lot of time there we end up standing shoulder to shoulder with people, right? Now here, if you find yourself too close to someone at the water cooler at Yes. work or near the coffee machine, Right. you'll probably get a curt "excuse me" and they'll step back. Right. So that is important. Second, verbal space is just as important. Talk when others are not talking. Wait patiently and listen when they are. Okay? And then, in fact, I have seen too many Indians at work who need to be told, let me finish at a meeting. So don't be that person, right? And while we are on the subject of talking, here's another tip. It helps to talk slowly and coherently. Remember, we are the ones with an accent here, right? So third is, please and thank you go a long way. Use these as often as possible. Yes, please, sure, thank you, appreciate it, should be very commonly uttered phrases. Right. Fourth, please hold the door open if you see someone coming right behind you. If you're a man, and or anyone, if you see a lady coming in, if you see a senior person coming in, if you see someone holding a lot of stuff, then stay behind and hold the door open and allow them to go through. Otherwise, you go on ahead and leave the door open, let the other person take over. Yes. Right? Yes. So I have seen that attitude, सोनल, ये मेरे को भी याद है शुरू में जब मैं आई थी इस चीज, ये this actually gesture brought a lot of change in me, in fact, my personality, because जब हम शुरू में आते हैं, सब लोगों की आदत यहाँ पे होती है, hi, have a nice day, have a wonderful day, have a good rest of the day. Those are the common phrases. They all have the habit of saying it. I know. We did not had it in back home in India. We never talked to strangers. We never greeted strangers. Exactly. Right? और मुझे लगता है कि इनफैक्ट मेरी एटीट्यूड इतना हो गया था कि जब मैं couple of years ago when I went back, I was literally holding the door seriously, literally. मतलब इंडिया में लोगों की आदत आराम से निकली जा रहे हैं जैसे मैं गेट कीपर लगी हुई हूँ। मैं कहा यार ये वाकई एटीट्यूड मेरा अमेरिका में ही चलेगा, इंडिया में नहीं चलेगा। बिकॉज इंडिया में आई गेस इतनी क्राउड होती है हर जगह, राइट? So I know, but this is something, and in fact, to your point, the next point मेरा जो है is to stare is not normal. Yes. Right? Yes. If you make an eye contact with someone, but you neither break the eye contact nor acknowledge the eye contact with either a smile or a tight-lipped smile, oh yes, you will learn to do that, or a simple hi, then you are staring, Yes, right? yes. Quick,
do one of the four things that I just mentioned. Yes. Either break the eye contact or smile or give a tight lip smile, which you learn to do again, or just say a simple hi or Hi. how are you, Yeah. right? Yes. So, and then the sixth point. Do you want to Before, take a break? yes, definitely. Okay. I think सोनल ऐसे करते हैं कि एक गाना भी सुनते हैं. हमारे पास कुछ लिसनर्स की रिक्वेस्ट भी आई हुई है. जरूर. तो उसके बाद विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. ठीक है, तो ये फारूक भाई, आई नो यू रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग अ व्हाइल अगो. आई अगेन होप दिस इज द सॉन्ग. मूवी का नाम है ऑल इज वेल, बातों को तेरी. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिस वाज अ सॉन्ग दैट यू वर मेंशनिंग. आपको मूवी का नाम याद नहीं था, बट लेट्स लिसन टू दिस वन. आप सुनिए इसको और मुझे बताना कि इफ दिस वाज योर सॉन्ग. अभिषेक बच्चन और आसिन पर फिल्माया गया अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत आवाज में. सुनते हैं इस गाने को राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ रेडियो हॉट पेपर 1220 AM. बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कैसे दिल को समझाए दिल माने ना. बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. Welcome back. We have somebody with us. Good morning. गुड मॉर्निंग नीता जी. थैंक यू. यही है सॉन्ग. यही वाला सॉन्ग है. ठीक है. मूवी का नाम है ऑल इज वेल. ओके, थैंक यू. और सबसे पहले तो सोनू जी को वेलकम टू द हमारे रेडियो 1220 पे. Thank you बहुत very शुक्रिया. much. Thank you very much. मैं जब अमेरिका में आया था तो मुझे एक कंफ्यूजन हुई थी. मैं जब सुबह एक दूसरे दिन टूथपेस्ट लेने गया हाँ. टॉम में, तो मैं जब गया तो मैं देख के हैरान हो गया कि एक पूरी मेरी 20 फुट सब टूथपेस्ट लगी हुई है. मैं हैरान हो गया. मैं कौन सी लूँ, इसमें क्या फर्क है. हम तो ये जानते हैं कोलगेट तो क्रेस तो दिस तो दैट ओनली 4, इससे ज्यादा. I was confused. I had to go back to talk to my friend. I said, man, what can I do? This is the whole thing. Maybe 200. I know, हम सबके साथ ऐसा हुआ. Right. Thank you very much. Okay. Sure. Thank Thank you, you sir. for Thank you, sir. calling. Thank you so much. 817-468-1220 is the studio number. सुन रहे हैं मॉर्निंग चाय दिल से आरजे नीतू के साथ. भीड़ में तन्हाई का एहसास है, खुदा जाने खुदा जाने खुदा जाने. यादों को तेरी हम मिटा ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. बातों को तेरी हम भुला ना सके.
a quick time. There's some construction going on Highway 30 west and east side of Summit Avenue, and that is causing some traffic here and there. There's a minor accident on Highway 35 east north at Walnut Hill Lane, causing traffic on Lane 3, Lane 4 and Lane 5. We have a minor accident on Highway 80 west at Highway 635. That is causing traffic on the right shoulder. 817-468-1220. Keeping an eye on that traffic, ladies and gentlemen. सुन रहे हैं मॉर्निंग चाय दिल से आरजे नीतू के साथ. Hindu Temple of Greater Fort Worth will inviting you to Sri Krishna Janmashtami celebrations, and that is going to happen on September 4th and September 5th, which is Friday and Saturday. They will start the event at 6 p.m. in the evening with Balakrishna Sthapna. At 8:30 p.m. to 11:45 they'll have pujas followed by bhajans by the local group, and at 11:45 to midnight they'll have aarti and jhula. This is for Friday, September 4th. Saturday, September 5th they'll have Janmashtami celebrations from 10:30 to 11:30 a.m. 11:30 onwards they'll be celebrating Nand Mahotsav, that is Govinda Alare. This event will be outside on the temple premises. 817-468-1220 for all your stories too. Back to America. Sonal, कंटिन्यू करते हैं, एंड आप हमें कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर कर रही थी फॉर द स्टूडेंट्स हु कम ओवर हियर. राइट, आई थिंक हम सिक्स्थ टिप में से जी. सो अच्छा, अप्लाइंग ऑयल ऑन हेयर, नीतू. I totally agree that it's truly good for hair, right? But it's a hair care regime that needs to be followed in the privacy of your home, just like any other skin care or teeth care or body care routines that we follow in our bathrooms, right? So the 7th point. Do you know that V and W are two separate letters in English with its own sound, right? Unlike in Hindi, we have just one V, right? So, don't say grape wine for grapevine, right? And when your kids are cranky, they whine, not wine, right? So just pay a little attention to it. We know it, but because in Hindi there's just one verb, we tend to mix it up. बिल्कुल, लैंग्वेज में अब काफी है जो देसी हमारे कहते हैं वेडनेसडे, यू नो, वो बोलेंगे, या मतलब एक और वर्ड होता है मेरे दिमाग से अभी आई थिंक स्लिप कर रहा है, बट इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग 20. 20 नहीं, 20, राइट, यू नो, थोड़ा सा वो वे ऑफ स्पीकिंग है, बट विच इज एन एक्सेंट ऑल्सो समटाइम्स यू पिक अप आफ्टर यू टॉक टू द पीपल. एंड कुछ लोगों का एक्सेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है, कुछ कम होता है, एंड जैसे जैसे यहाँ रहते हैं वो काइंड ऑफ आयरन आउट होते हैं, राइट, राइट, एंड दैट्स नेचुरल. सो just pay a little bit of attention to it, right? So the 8th point, boys, please don't put your arms around other boys' shoulders every time there's a camera in front of you, unless you are together. Yes, you know what I mean? Definitely. Right? So the 9th, okay, yeah. Yes, we have a caller actually right now. Good morning. जी, मैं भी एक स्टोरी आप शेयर कर लूं. इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए शोएब साहब. जी, बताइए प्लीज. आई केम अमेरिकन 90s में जो है ना, इतना जो मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ, मीडिया इतना वो नहीं था. तो न्यूज नहीं मिलती थी, कहीं से न्यूज नहीं मिलती थी, और मतलब यहाँ के मतलब वो चैनल नहीं होते थे. तो मैं एक दफा गया जंक यार्ड में, मुझे एक शॉर्ट वेव रेडियो होता है ना, वो मुझे मिल गया. अच्छा. तो मैं उसको लेके आया, मैं उसमें तार वार बांध के मतलब विंडो से बाहर लगा के बहुत कोशिश की किसी तरह से हिंदी सर्विस, बीबीसी हिंदी सर्विस और बीबीसी उर्दू सर्विस सुन ले, न्यूज मिल जाए, मगर उससे भी काम नहीं चला. अच्छा. तो आजकल तो मीडिया बहुत एडवांस हो गया, मतलब जहाँ भी लगाओ. बिल्कुल, आजकल तो हर जगह हिंदी न्यूज मिल जाती है. उस जमाने में बिल्कुल कोई खबर ही नहीं मिलती थी ना पाकिस्तान से, मतलब आपको वैसी न्यूज सुन लो तो इंटरनेशनल अगर न्यूज में कोई आ गई तो आ गई. सही बात. एग्जैक्टली जी, हाँ सही बात है. ये तो बड़ी वो ढूंढ ढांड के मैं लेके आया वो शॉर्टवेव रेडियो, और बहुत कोशिश की, वो काम अगर वो नहीं हो सका, नहीं बना काम. राइट, आई नो. अब तो बहुत सारे चैनल्स हैं, हाँ, जस्ट ऑन एप्पल टीवी, रोकू, ये सब भी है अब तो, है ना. बिल्कुल. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी शोएब साहब.
बिल्कुल। एंड आपका सॉन्ग भी बिल्कुल मैंने लाइन अप किया हुआ है, तो नेक्स्ट अभी लगाने वाली हूँ जल्दी, ठीक है? ओके, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सोनल, वी डोंट हैव मच टाइम, तो जल्दी से हम अपनी डिस्कशन को भी कंक्लूड Wind करते up हैं। करे है बिल्कुल। ना, बस last 2 points. Ninth point is a no. Reason if you must, but don't please beg. I had a professor once, in fact, who had to resort to putting a notice on his office that said no begging allowed. By the way, that applies everywhere. Please don't beg. Don't have that begging sound and that Yes, expression. exactly. And the last point, please use deodorant. No, not talcum powder. And no, perfume is not enough. That is in addition to the deodorant. Yes. Now, all that said, know that, all the students out there know that you're perceived as smart and intelligent being here in America simply by virtue of being Indian, unless you prove them otherwise, right? So hold your head high and carry yourself courteously and confidently. बिल्कुल। Best of luck for all your endeavors here in America. Definitely. Thank you so much, Sonal. Truly appreciate you coming on radio again with me and sharing this wonderful story. और बाकी सारे listeners की भी story सुन के बहुत अच्छा लगा, जो आपने stories share की अपने not local but even outside callers से. So truly appreciate all those stories. Definitely hope we all got to learn some and we all got to share some stories. तो next month का topic क्या होगा, सोचा है? Oh, अभी सोचा नहीं. In fact, you know what? Your listeners should give us suggestions, right? That would be Definitely. awesome. Yes. वो क्या टॉपिक में बातें सुनना चाहते हैं? डेफिनेटली। तो अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस हो तो जरूर मुझे ईमेल करें neetu@radiohotpepper.com पे, एंड वी वुड लव टू ब्रिंग दैट इनटू द स्टूडियो विद सोनल कुलश्रेष्ठ। थैंक यू सो मच सोनल। Thank you, Neetu, and thank you to Radio Hot Pepper also for having me over. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, without any delay, this is of course Neetu also signing off from my show. लेकिन जाते जाते लगाना चाहूंगी शोएब साहब की रिक्वेस्ट। ईशान, आई नो आई एम अ बैड आरजे, टोटली बैड, आपका सॉन्ग नहीं लगा पाई हूं, लेकिन यू नो व्हाट, प्रॉमिस है कि कल को आपका सॉन्ग जरूर लगा दूंगी, मलंग वाला। शोएब साहब, हियर यू गो, छैला बाबू 1977 की ये फिल्म, एंजॉय दिस वन।